अभी कोई इंसान बेस कैंप से ऊपर जा रहा है तो किस टाइप के क्लोथ्स होंगे? So from the base camp to summit push day, right? Summit, that means guys Mount Everest का वो तुम्हारा पीक, तुम्हारा ड्रीम. हाँ. So what do you need normally is you need a very proper gear. Okay, for that one you're gonna need a primal of trousers or else a down pant. Down pant, that means अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास डाउन जैकेट ही नहीं है, फेदर्स के बने हुए जैकेट नहीं है, अब आपके पास ऐसी पैंट भी है और प्रॉपर एक ऐसा डाउन सूट है जो कि ऊपर नहीं आपको नीचे भी काम करेगा. बिकॉज गाइज अगर आपकी नीज अगर आपकी ठंडी हो जाएगी तो डेफिनेटली आप चल नहीं पाएंगे, आपके बोन्स में अगर चला जाएगा तो चल नहीं पाएंगे. और so this one is a down pant. Exactly, right? ये डाउन पैंट है. And this one is a primal of gold insulated trousers. Okay. Right? Some people who are vegan, then they go with this kind of fabric. Okay. So what's happened? This is a full jeep. When you put up very big shoes, we call it 1,000-meter boots or as Olympus Evo, right? In that scenario, you cannot take it out very easily. It might take minimum 4 or 5 minutes, and it might take some energy, you know. So what the people they do, they go with this kind of fabric with the full jeep. You just open it from here, right? इसके अंदर feathers कौन से filled है? नहीं feathers. It's a Primaloft. Primaloft. Nice. What's that exactly? It's a like technically we call it, people they call it the fiber jacket, okay, fiber or a synthetic, you know. That means इसमें animals का कुछ भी use नहीं है, so ये पूरा vegan है. Vegan है, right? ये दो options मिलते हैं. Yes, in that 2 options. ठीक है. तो बेसिकली गाइज ये एक तरह का डाउन फेदर वाले यहाँ पे ये पैंट है. ये थोड़ी सी फ्लफी होती है, जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगने वाली बात है तो फिर डेफिनेटली आप वो ये लोग जा सकते हैं. बट इसमें ये प्रॉब्लम होती है, इसमें जिप नहीं है. अगर यहाँ पे आपके पास जिप होगी तो आपके लिए ईजी होगा कि आप यहाँ से अपने शूज में ईजिली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. बिकॉज शूज खोलने में भी उतना टाइम लगता है, वो बहुत बड़े बड़े शूज होते हैं जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं. उस टाइम पे ऐसे फंक्शनल फैब्रिक या फंक्शनल क्लोथिंग बहुत अच्छे से काम करती है, जो कि आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है कि आप इजीली अपने पजामास को पुट ऑन कर लो. Yes sir, yes ma'am. Then if there is something like if it's hit by the crampon, then you're gonna destroy your trousers. Of course. Right? But this one not. You can still fix it. Fix it. Correct. Right? So these are the 2 products for the bottom part. But what's the cost? इसका क्या cost है? Same price. Same price. Like a down. For example मैं देख रही हूँ ये 24,000. तो ये 2 आपको चीजें मिलती हैं. तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस है. जो लोग मोटे फैब्रिक्स या फिर जो लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई यार मोटा है तो भी अच्छा है या फिर तभी वो काम कर सकते हैं, तभी वो चल सकते हैं, उनके लिए डाउन है. लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको पता होता है वो कितना बॉडी हीट ट्रैप होते हैं, कितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस टाइम पे ऐसे वाले फैब्रिक्स लाइट वेट, मिड वेट विथ फंक्शनल फैब्रिक्स काफी काम आते हैं. तो ये आपके रहा नीचे का. So ऊपर इसके भी अंदर हाँ जी. वाओ, इसके भी अंदर लगेगा. It happens now for the base camp, right? So most of the time in base camp, the people they just hike for 2 hours early in the morning time, right? In afternoon they're going to stay idly. So only during that time, the only one fabric that keeps them warm is this Alpha Polar Tech. Alpha Polar Tech. Okay. Yes, Polar Tech we call it, or else Polar Tech Power Stretch Fabric. Power Stretch. Yep. Cool. In short, we call it base layer, thermal, skin layer. Okay. Right? Cool. So you're gonna put this one. Then on the top of it, we recommend this one. Right? Because this is something for the climbers, the primal of fabric. This is something like जो जल्दी गीला नहीं होगा, but इससे आपकी जो heat है वो अंदर ही trap रहेगा. हाँ जी. Correct. So for the top part, we're gonna use the similar fabric of products, right, as a base layer and as a mid layer jacket. Base layer वाली उसका cost क्या था? 12,000 rupees. 12,000. Okay. By the way, guys, ये सारी नेपाली रुपीस, नेपाली करेंसी में बात हो रही है. So when you have to go in the mountain for the Everest or something like this, in that time, what you need is only warmth, man. About the cost, this is your base layer. Once you reach in base camp, right? So on the top of this one, you're gonna put during the daytime till max 12 o'clock. You'll put only one down jacket, the lightweight one, like this one, or else like this one, right? Then after,
in the evening time, from 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, they will use this one. The more heavy one. The more heavy one, because it will provide you warmth like this, poof, you know. So once you feel sick, cold in base camp, then you might need to shift back to the correct lower places. Your place. So that means guys, जब आप यहाँ पे 12 से 2 बजे तक के बीच में होते हैं, अपने बेस कैंप तक आप पहुँच चुके हैं, फॉर एग्जांपल आप 12 से 2 बजे तक बीच में हैं, तो फिर तब उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे फैब्रिक्स चाहिए जो कि ज़्यादा भी गर्म नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ हाइकिंग करनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए, और जैसे कि हमने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ टेक्निक सीखते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक ऐसे फैब्रिक चाहिए डेफिनेटली आपको हेल्प करें टू थोड़ा सा आपको एक रूम प्रोवाइड करें आपके बॉडी को मूव करने का। तो उस टाइम पे आप सिर्फ एक बेस्ट लेयर पहनेंगे और उसके ऊपर आप एक ये डाउन जैकेट का, ये जो मैंने अपनी अभी एग्जैक्टली पजामा दिखाया था वो पहन दें, या फिर आप ये मिड वेट के डाउन जैकेट्स पहन सकते हैं। बट 12 से 2 बजे के बाद फिर आपको एक हैवी वाले डाउन जैकेट चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप होता है, और दैट टाइम आपको जनरली चाहिए कि आपको एकदम से हीट प्रोवाइड हो बाय अ हैवी वेट डाउन जैकेट। Okay, cool. Right. That's the normal routine for the base camp for all the summiters. Okay. Right? तो ये सारे कपड़े आपके बेस कैंप तक के लिए थे। हाँ जी। अब बेस कैंप से समिट तक जाने का। Base camp से summit तक, first they're gonna do rotation. Rotation, right? exactly. And during the rotation time, they go with the primala fabric and they go with the down jacket. Down jacket in the morning time, because they have to start from 2 o'clock in the very early morning time. And that time is super cold, right? So you need everything must be well checked, right? You're gonna put. So normally we call it, this one is your summit base layer too, right? So they're gonna put this one, they're gonna put fleece, and they're gonna hard shell, and they're gonna put this one till camp 1. Once they reach camp 1, then when the sun rises, with the reflection in the snows, it becomes super hot. In that time, they will take out the down jacket, and they're gonna put only mid layer and your hard shell jacket, right? Correct. So you feel not so hot, not so cold, but you feel very active. Correct. Right? So that means guys, यहाँ पर आप जब आप रोटेशन कर रहे होंगे कैंप, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, कैंप 1 कैंप 2 तक जाते हैं वापस आते हैं, कैंप 3 तक जाते हैं वापस आते हैं, थर्ड टाइम में आप समिट पहुंचते हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ लेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप रात के 2 बजे From this camp they will start from 2 o'clock. 2 बजे, और उस टाइम काफ़ी ठंड होती है, तो उस टाइम आपको वही सिनेरियो लगाना पड़ेगा, बेस्ट लेयर आपका, बेस लेयर, देन फ्लीस, देन हार्ड शेल, फिर डाउन जैकेट। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, तब आप गर्मी जब होती है, जब एकदम से स्नो पे जब आपके धूप पड़ती है, तब बहुत गर्मी होती है, तब आप अपनी डाउन जैकेट जनरली आप उतार देते हैं। तो ये जो थे जो क्लोथ्स है जो कि आप डेफिनेटली आप वहाँ पे ले जाके कैरी कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा कुछ? Then after, from camp 2, they will start a down suit. Down suit. Yeah, they're gonna put the polatic powder, this is base layer for the top and for the bottom, for the top and the bottom. Then after they're gonna put the mid layer. Then after a single down suit. Okay. So that means guys, कैंप 2 से कैंप ऊपर मतलब समिट तक के लिए आपके फिर डंगरीज या फिर कई जंप सूट्स आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ना सिर्फ डाउन जैकेट या डाउन पैंट्स पहनने पड़ते हैं, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जैकेट्स और डाउन सूट मतलब नीचे पैंट वाले पहनने पड़ते हैं, इसके ऊपर आपको मिड लेयर भी डालना पड़ता है, हार्ड शोल्डर भी डालना पड़ता है, और साथ में आपको एक जंप सूट पहनना पड़ता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपकी स्नो काफी ज्यादा आ जाती है। Not because of snow, because of the cold. Cold, right? Cold. So you're gonna equip properly. Some people they're gonna do rotation with their down suit, right? And some people they're gonna put their down suit from camp 2 or else camp 3. So it depends to person, okay? So this normal we call it 8,000 meter suit. This one is especially designed for -40 degrees. -40 degrees. मतलब -40 डिग्री गाइस वो टेम्परेचर है जो कि एवरेस्ट पे होता है, और ये डाउन सूट पहन के ही लोग आगे चढ़ते हैं। इसके अंदर काफी सारे लेयर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल बेस लेयर होता है, डाउन one mid layer, then after this one, okay. No down suit, the jackets or the pants. Nope, only this one. So this will work everything, right? Okay. So this one is a protect silk fabric, which is like a highly waterproof one, but we just say water resistance because you cannot put it in the rainforest or with a very rainy area. So that's why we call it water resistance fabric. Okay. This is the only one down made by 850 field, right?
most of the product from the raft for 8,000 meters, they are made in England itself. Okay. And all the down, they are very hand filled perfectly. So that means stitching and everything is done in England because for the security of the clients, right? Correct. So now what happens? This one, it have a every axis, right? This contains 4 to 5 zippers over here. So when you feel very hot, you can open it up like this way. You see a big hole over here, Wow. right? So you should know how to arrange your zip. Okay? Got it. This is the outer part only. Right? So while moving up, you should put your zipper in the mid part. So when you feel very hot, you don't need to go up and down, you know. You just pull it like this way. And when you feel very hot, if you feel a little bit hot, it depends upon you how you want to do it. In the scenario of the mountain, right? So now, if you want to start to put oxygen, Can I wear this? yes. I just want a YouTube thumbnail. You see, this is a down bit, right? That will support you. And inside this is a place where you can keep your 500 liter of water, your mobile phone or anything else. Normal people, they keep it in the mid layer. So this is for your water bottle, yeah? And it's very easy. Once if there's a traffic jam, then you can put your hand inside like this way. Okay. Yes? So till this part, you cannot do anything else because this will be taken by the harness. Right? You need to put harness too. Okay. Right? And if you want to go toilet or something else, something weird, then there is a zipper like this way. Oh, so आपको पूरे का पूरा खोलने की जरूरत नहीं है. अगर if you want to go washroom, Then you just go, it will do like this way. So this is good for both men's and women's one. correct. सो बेसिकली गाइज ये आता है सबसे मेजर और सबसे धमाकेदार प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पे ये डाउन फेदर्स का बना हुआ पूरा जंप सूट. ये काफी फंक्शनल फैब्रिक है. इसके अंदर आप मिडलेट डालेंगे, यू आर गुड टू गो. -40 डिग्री में भी ये काम करेगा. इसमें काफी सारी चेन्स है, तो अगर आपको यहाँ पे गर्मी लग रही है तो डेफिनेटली आप यहाँ से खोल के आप यहाँ पे हवा खा सकते हैं. इसके बाद अगर आपको ठंड लग रही है तो आप यहाँ से इसको ओपन करके आप इसके अंदर अपना हाथ डाल सकते हैं, तो आप इस ठंड से बच जाएंगे. इसके बाद यहाँ पे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चेन्स लगी हुई है. और ये पूरा का पूरा डाउन जो आप ये जंप सूट देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा उस टेम्परेचर और उस जगह पे आपको उस ठंड से लड़ने में. सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ इंग्लैंड में ही बनता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि जो भी इंसान इस इस ब्रांड से ले रहा है उसकी ये जान की बात है. जब वो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सेफ रहे उनके ये डाउन जंपसूट्स पहन के. सो इसका कॉस्ट क्या होगा? 1,30,000 नेपाली करेंसी. हाँ जी गाइज 1,30,000 का ये जैकेट पहन के आप चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट पे. अगर आपको दम है और आप में जिगरा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है. -40 डिग्री में भी धमाकेदार काम करने वाला है. सो गाइस ये आपका -40 डिग्री तक काम करेगा और जनरली इससे नीचे कभी नहीं जाते हैं. और अगर चला भी जाए तो डेफिनेटली जो आपका शेरपा जो आपका लीडर है वो उतना हार्श कंडीशन में नहीं ले जाएगा. और इसके साथ साथ आपके पास एक स्लीपिंग बैग भी है जो कि -40 में काम करता है. तो डेफिनेटली आपको ये पहन के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू आर गुड टू गो विद दिस क्लोथिंग. Plus, you're gonna have a -40 sleeping bag too when when the temperature drops down to -60 or 70. In that scenario, just open the sleeping bag. Correct. So now guys, बात होगी हमारे किस तरीके के कपड़े होने चाहिए. Now come on the most interesting part.
क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करें कि आप काठमांडू से स्टार्ट करें तो कैसे कैसे तरीके के आपके पास एक्सेसरीज होने चाहिए, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें वो भी आपको यहाँ पे मारमॉट के स्टोर पे मिलेगा। एंड लामा इज द पर्सन हु जस्ट नो एवरी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु जस्ट क्लाइंटेड माउंट एवरेस्ट, ऑलमोस्ट सबको वो जानते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन जो आपको बता पाए, गाइड कर पाए कि आपको किस तरीके के इक्विपमेंट्स चाहिए जो कि आप यहाँ पे मारमॉट के स्टोर से आके ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर है, बट कहाँ से? Well, only for trekking, you need a normal gloves. That depends upon your budget, how much you want to spend on it, you know. For example, let's say you need this kind of only a shell gloves one. Then after, once you want to go for like for the trekking, then probably you might need the mid-layer gloves too, right? Like this one. These are also similar fabric, the Polartec fabric, right? Then after, you need something like this one, which is windproof and waterproof fabric. So when you walk, you don't need to, the wind will never hit in your bare hand, right? But after some certain elevation, let's say from Dingboche, Namche, you will start using the mid layer, right? You can go with the layering system, or else you can go with it directly this kind of a gloves, the Primaloft with the Gore-Tex fabric gloves, which is an insulated gloves, right? So the price, it may varies from fabric wise. It might be quite expensive, it might be quite cheaper too. So it begins from 5,000 to 18,000 rupees. Okay. Right? But this kind of glove, generally the summiter people, they buy it so that they can use it on Camp 1 and Camp 2 also. Correct. Right? So, and the base layer for the, especially this is the only one base layers, like a different company they produce different one, so it needs to be a mobile access one, right? So when there is, well, if I'm walking, if the weather is very cold, you know, so you don't need to take it out your bare hand, so you can easily use the similar gloves for the taking pictures, for using your phones, you know. So nowadays, like almost all the mobile companies, they put with the mobile access one. So it's very easy access to use your phone, right? And then after you need from base camp to summit push, you need this kind of gloves, which is also for -40 degree. Okay. Right? This one is basic. This is the only one glove that you might need to use for your everything, because this is the down 800 film, similar to that jacket that we have seen, right? And this is 2.5 layer of Gore-Tex with the Primaloft insulations. So normally people, how they use it is like this one. They use the base layer when the weather is very sunny and nice, a bit windy. They use a base layer. Then after they put this one on. Not this one? Not this one, right? So it's so because it will be very easy to access for Kumari. Right, for rappelling, for everything. But when the weather is very less, when the weather drops down, in that scenario, you might put this one, 800 field goose one, like this, and you might use it like this too. Okay. Right? Normally you don't put directly, you just need to hold it over here. Sorry guys. You're gonna hold it over here like this. Yeah? Then after you have to put the gloves on. Okay. और जब आपको नहीं चाहिए ग्लव्स तो आप इसको कर सकते हैं? नहीं. So if you have to go with your mobile access, so if you take it out like this, if you forget to drop it, the wind will swipe away your gloves. Just to make a hole for it, they have put this kind of system. Got it. Yeah? So still now you need to take submit pictures and everything else, right? So when you want to come back, again, you just put it on like this way. Got it. So guys, now coming on to the gloves part. तो ग्लव्स भी वैसे होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करे कि आपका मोबाइल, अगर आपको पिक्चर सेल्फी लेना है तो वो उसके लिए हेल्प हो। साथ में कुछ ऐसे ग्लव्स जो कि जल्दी गीले ना हो पाए, बिकॉज आप काफ़ी टाइम आपके स्नो में आप कहाँ जगह पे गीले हो सकते हैं,
विंड प्रूफ भी होने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए तब आप ग्लव्स ले रहे हैं। तो जनरली जब आप ट्रैक करते हैं टिल बेस कैंप, आप ऐसे वाले ग्लव्स आप रख सकते हैं, ये दीज आर गुड टू गो विद दैट। और इसके अंदर एक बेस लेयर होता है, ये भी एक काफ़ी खास फैब्रिक से बनता है जिससे आपका जितना भी वार्म होता है आपका बॉडी का वो अंदर ही रहे। साथ में यहाँ पर एक मोबाइल एक्सेसिबिलिटी ये यहाँ पे दिया गया है, इससे आप अपने फ़ोन्स भी चला सकते हैं। तो आजकल ये मोस्टली अच्छे जितने भी ग्लव्स आ रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड ग्लव्स में ये सारी चीज़ें ये अवेलेबल है ताकि आप अपनी सेल्फीज ले पाए। और इसके साथ साथ जैसे कि अगर आप बेस कैंप तक जा रहे हैं तो ये वाला आराम से आपको ग्लव्स काम करेगा 5800 नेपाली करेंसी में। देन ये आपका बेस लेयर आता है, इसका कॉस्ट क्या होगा सर? 3,000-4,000 के बीच में होगा। और जब आप बेस कैंप से ऊपर जा रहे हैं समिट तक के लिए या फिर एवरेस्ट तक के लिए, तब आपको ऐसे वाले जरूरत पड़ेंगे ग्लव्स। अब यहाँ पर अभी जो हमारे को लामा सर समझाए थे कि यहाँ पर इट्स ईजियर कि आप यहाँ पे इस वाले थ्रेड को अपने हाथ में डालें ताकि जब आपको फ़ोन चलाना हो तो आप इसको चला लें, लाइक इसको पहन के चला लें, नहीं तो फिर इसको आप इजीली अंदर से पहन सकते हैं लाइक दिस। और अगर आपको उस टाइम पे फ़ोन चलाना हो, वैसे तो ये ऐसे दिखता है और ये काफ़ी इजी होता है आपको ग्रैब करने के लिए, तो आप इसको ऐसे रिमूव करते हैं। और क्योंकि विंड बहुत तेज़ होती है तो ग्लव्स कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं, एक ये बाहर की लेयर जो कि विंड प्रूफ है और साथ में वाटर प्रूफ है, और इसके साथ ये एक होती है, ये भी डाउन फेदर्स की बनी होती है जिससे काफ़ी वार्म प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ प्लस इसके साथ। तो जब जनरली लोग ये बेस फैब्रिक पहनते हैं, बेस ग्लव्स पहनते हैं और ये पहनते हैं, लेकिन जब रात में बहुत ज़्यादा ठंड ड्रॉप हो जाती है तब ये तीनों के तीनों लेयरिंग करनी पड़ती है, करेक्ट? यस मैम। और इसका क्या कॉस्ट होगा? 28,000 rupees. 28,000 रुपीज़ में आपको ये ग्लव्स मिलता है जो कि आपको समिट तक के पहुंचने के लिए हेल्प करता है। Thing like you might need like a trekking poles like this one. So it depends upon the people which one they prefer, the carbon one or else aluminium one. Right? Then after you might need a headlamp too, like this one. So the 175, 350, 700 means the lumens, right? The brightness. Normally for the trekking people, for the trekkers, they will go with 350 or else 175, right? And for the, especially for the expedition, they might go with the 700 lumens because the headlamp, in the 700 lumens, the headlamp, the battery will be fixed from the back side. So once they put a down suit, hoodie and helmet, it will help you to for the conservation of the batteries, you know, long life. Long life. ओके सो गाइस, ये जो बैटरीज, ये जो हेडलैम्प्स हैं, ये आपके हेल्प करता है आपको अंधेरे में रात में देखने के लिए। और जनरली लोग 350 ल्यूमेंस मतलब इतने ब्राइटनेस वाले हेडलैम्प्स के साथ जाते हैं, लेकिन जनरली जब आप ट्रैक बेस कैंप से ऊपर जा रहे समिट तक के लिए तब आपको 700 ल्यूमेंस तक की ज़रूरत होती है। इसमें बेसिकली आपके पास पीछे एक आप जैसे कि इसमें देखेंगे पीछे बैटरी भी आती है, प्लस इसमें यहाँ पर ये लैम्प भी है, तो ये आप अपने हेड पे आप लगा देते हैं ताकि पीछे आपका ये बैटरी रहे, और जब आप जंप सूट पहनते हैं तो फिर ये बैटरी ढक जाती है। राइट। आफ्टर दिस these are the sticks. Sticks for walking poles. Walking poles. So Like the headlamps, it depends upon the lumens one, which one you want to go with it, and the poles, it depends upon the client whether they want to go with the aluminium one or the carbon one. कौन सा अच्छा है? एल्युमिनियम अच्छा है, कार्बन अच्छा है? Carbon is much more better one because it's lighter and more durable one. More durable. तो ये जो स्टिक्स हैं ये ऊपर तक समिट तक काम करते हैं। हाँ जी। कितने का होगा ये वाली स्टिक्स? Carbon one it starts from 14,000 rupees. 14,000 rupees. Yeah. And after the aluminium one it starts from 7,000, 8,000 rupees. ये आप एक ओपन करके दिखाएंगे कितना बड़ा? Yep. This is a Alpine carbon cork from Black Diamond. Right? This is a very classic one. You see, just open it. You need to make your own adjustment. It depends upon the people's height. Let me keep it for you. Sure, thank It have to be 90 degrees, right? So it depends. When the people they go uphill, they might take in the longer way. When you have to go downhill, you might want to make it shorter.
So it all depends upon you, you know, in which one you feel comfortable. Of course, of But technically, it have to be like 90 degree in the plain area. तो जनरली गाइस इसके हाइट एडजस्टेड होते हैं, लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं और दिस विल हेल्प यू टू क्लाइंब। आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो आपको थोड़े से लॉन्गर चाहिए होते हैं, सो दिस विल हेल्प यू टू क्लाइंब। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको थोड़ी लॉन्गर स्टिक चाहिए होती है, जब आप नीचे चढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ी शॉर्टर स्टिक चाहिए होती है। आई फील लाइक इसके ऊपर एक कंपास दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। नहीं एक डायरेक्शन के लिए हेल्प होता नहीं। No, no one you put like this. When you feel tired, you want to put all the weight on your stick. One extra small. So कितना weight ये कैरी कर सकते हैं? Your body weight. Total body weight. हाँ जी. ठीक है, perfect.